seriously, and I was like, maybe. हाँ So I went home, and then I had a talk with my mother. She obviously threw a fit हाँ because I come from a very conservative हाँ family. मैं sort of आने लगी थी कि you हाँ. come from a very conservative family. Yes, from my and father's side. from yes. your father's yes. side. और जहाँ तक सुना पड़ा है वो है कि it's a feudal background. It is a जी बिल्कुल feudal family है और उसके अलावा my father was also involved with politics थोड़ा बहुत उन्होंने किया था. उसके अलावा जो उससे added जो मुश्किलात आती हैं वो ये था कि हम गद्दी नशीन हैं. Right. तो पर्दा भी और बहुत किस इलाके के? हासिलपुर चिश्तियाँ बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट साउथ Right. पंजाब. Right. So वहाँ पे तो my father was a very progressive man. वो actually चाहते थे कि मैं politics में आऊँ. वैसे आना चाहिए था मुझे है ना? लगता है हाँ पता नहीं. अभी भी देर नहीं हुई वैसे अभी भी देर नहीं हुई हाँ शायद मे बी बट तो ऑब्वियसली वो तो नहीं होगा कि अभी उनका ये तो जहन में नहीं था कि भाई कभी सामने ही नहीं आना ऑब्वियसली बिकॉज वी वेंट टू स्कूल एंड वी वर लिविंग इन लाहौर तो बस ये था कि एवरी टाइम यू नो डू इन रोम एज द रोमन्स डू कि हम जब गांव जाते थे तो ऑब्वियसली वो नकाब वगैरह करना पड़ता था तो अम्मी थिंकिंग के अब्बू जो हैं वो मना कर देंगे तो उन्होंने कहा जाके आप से पूछ लो तो मी बीइंग अ लाडली and a very very spoiled child. So I asked Abbu, and he said, "Okay, as you like." So my mother was just like staring at him in disbelief कि ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन या उसके बाद तो मैंने I suppose इसलिए किया शुरू में it seemed fun. Also मुझे लग रहा था कि I was also rebelling against a system. Right. So rebel with a cause or always been that way. But what would that cause be? अब समझ आती है उस Rebel cause against की? authority. Right. अगर मुझे किसी चीज की इजाजत नहीं है या कोई चीज अलाउड नहीं है तो यू मस्ट एक्सप्लेन टू मी व्हाई नहीं हाँ अगर किसी ने बस ये कह देना है कि नो यू हैव टू का जो फ्रेज है ना वो मुझे नहीं समझ आता either convince me have to में मेरा I just lose it I'm like no if you're saying I can't do this then I have a feeling inside that I must do this So for there was not a lot of opposition, but there was a little concern. Right. मगर शुरू में I didn't take it very seriously. उसके बाद कुछ साल गुजरे जब मैंने एक प्रोजेक्ट किया था आओ कहानी बुनते हैं with सानिया सईद और नुमान एजाज का वो एक experimental project था way ahead of its time. I think that's when I really started taking it seriously. That was in 2011. Yeah. Yes. That's where actually Google starts to. Google started taking me seriously also, and I started taking my work seriously. Yes, exactly. जी उससे पहले अच्छा वो भी एक चीज थी because I was ज़ाहिर बात है लाहौर में पैदा हुए born and bred in लाहौर तो यहाँ पे ज्यादातर लाहौर में सिटकॉम्स होते थे Although मैंने शुरू में एक्सपेरिमेंट किया था सरमत के साथ भी किया था उसका सीरीज लगती थी अजब कहानी so there was that I did और फिर सिटकॉम्स भी जवाद बशीर के साथ बहुत किया समीना अहमद के साथ किया तो जो सीरियल वाले लोग थे वो समझते थे कि मैं सीरियस एक्टिंग नहीं कर सकता राइट अगेन दैट वाज अ चैलेंज तो उसी वक्त मैंने आई थिंक आई आल्सो जॉइंड थिएटर राइट सो जोकर थिएटर दैट्स वेरी सीरियस दैट्स राइट इट डजंट गेट मोर सीरियस देन दैट एग्जैक्टली सो उसके साथ ही उल्लू बराए फरोख्त नहीं दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट जो लाहौर से हुआ है और कराची में चला है जो हम टीवी पे चढ़ा था राइट एंड इट डिड वेरी वेल ऑन इट्स ओन इट वाज really good for me. Yeah. So I got the spotlight and people were really surprised. तो तब से मुझे फिर seriously लिया गया जी और अब मतलब and of course उल्लू बराए फरोख्त नहीं was huge right it was huge that it's a was critically huge. acclaimed project absolutely I mean in every way and वो फिर बाद में जी जिंदगी पे भी उन्होंने भी पिक कर लिया they obviously changed the title and they started running it in India as well but वो character वो इतना was such a difficult character to do तो वो मेरा ख्याल है कि अगर आपने वो अपने ऊपर से लेबल ही हटाना है कि आप सिर्फ कॉमेडी कर सकते हैं तो no better project than उल्लू बराए फरोख्त नहीं to just kind of like wash away that absolutely that label that's been I mean what a project and look at your co-stars I mean yes it's like your oh my god co-actors you know it's like dream project. It was a मतलब जिन थे मेरे इर्द-गिर्द सारे जी बिल्कुल ऐसा ही है तो लूज बॉल का तो मार्जिन ही नहीं था मेरे पास I had to bring my A game हाँ तो हर जगह भी नुमान एजाज हैं इरसा गजल हैं सबा है युमना का तब नए प्रोजेक्ट था युमना वाज अ फैंटास्टिक एक्टर युमना है काशिफ निसार डायरेक्टर सुहेल अहमद साहब हैं मतलब सलीम मिराज साहब हैं मतलब किधर जाएंगे आप कहां पे आप कहेंगे कि यहां मैं नरगिस रशीद मतलब कौन नहीं था उस प्रोजेक्ट बिल्कुल बट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट
and I owe a lot of my career to Kashif Nisar. I mean, he is the one जिन्होंने मुझे he thought that I had a lot of potential. तो उन्होंने मुझे बगैर कोई ऑडिशन या बस उन्होंने मुझे मेरा थोड़ा सा काम देखा होगा, तो he started giving me work, and you know, he's the one who kind of changed my mind about work. And you've done several play dramas. जी मैंने काफी सारा काम किया उनके साथ, लेकिन on the whole अच्छे डायरेक्टर्स के साथ किया है काम. अल्लाह का शुक्र. अल्लाह के हाँ. चॉइस थी, मिल रही थी choices, या were you being selective? हर किस्म की स्क्रिप्ट आ रही थी, अच्छी बेकार? नहीं. I mean, like, to be honest, स्क्रिप्ट्स ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई इस तरह की कोई चीज है कि आपको बस आप एक दिन उठेंगे और 10 स्क्रिप्ट्स आपके पास पड़ी होंगी. काम आता जाता है, लेकिन अक्सर औकात वो काम मैं समझती हूँ मुझे मेरी समझ में नहीं आया वो काम. आई एम एन एक्सेप्शनली लेजी पर्सन. ओके. मेरी लाइक आई सेड पहले ही कोई एम्बिशन नहीं थी. तो पढ़ा क्या मतलब है? सॉरी मैं बात काट रही हूँ, लेकिन क्या पढ़ा और क्या पढ़ के क्या नहीं एम्बिशन क्यों नहीं बनी? पढ़ा ये कि ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया. ठीक है. लाहौर से. ठीक है. लाहौर ग्रामर. आई वेंट टू लाहौर ग्रामर. ठीक है. My batchmates and my juniors are also in the industry. Jugan and I went to school together. Okay. Kef was my batchmate. Right. Kef Ghaznavi. Aisha Umar is a year junior. हाँ. So we're the same lot. Right. उसके बाद O levels किया, A levels किया. अम्मी ने insist किया कि मैं कनेड जाऊँ. ठीक है. मुझे कोई शौक नहीं था जाने. ठीक है. तो कनेड जाने का शौक नहीं था या पढ़ने का शौक नहीं था? नहीं, मुझे पाकिस्तान में पढ़ने का शौक नहीं था. My brother was already studying in the US. ठीक है. एंड मुझे ये था कि भाई मुझे बाहर जब भेज दें आप. हाँ. एंड ऑब्वियसली अगर आप एक जिम्मेदारों की फैमिली से हैं तो आपकी तो फसलों पे कटाइयों पे आपके पैसे होते हैं. तो देयर इज नॉट सो मच कैश लाइंग अराउंड कि आप दो बच्चों को उस जमाने में इकट्ठे बाहर पढ़ने में. तो अब वाज लाइक यू नो लाइक होल्ड ऑन, हौसला कर लो. हाँ. और कनेड में गई तो मुझे समझ ही नहीं आई किसी चीज की वहां पे. आई मीन आई सॉर्ट ऑफ डिडंट मेक सेंस टू मी. So I decided after a year or two that I'm just not going to do this anymore. So I dropped out. Well done. Okay. Yes. And may I add that acting अभी तक जो है, ये वो वाहिद चीज है जिसमें मैंने interest नहीं lose किया. Because I lose interest very quickly. Okay. And I start something like मैंने makeup के courses किए. I was always into makeup. I wanted to be a makeup artist and I didn't do that. I didn't see it through. इस तरह की बहुत सारी चीजें मैंने की और मैं जल्दी ही बोर हो जाती थी. बस ये एक अभी तक मैंने काम ऐसा है that has kept my interest for God knows what reason. मगर it means कि अंदर कोई कीड़ा तो है ना, एक खुदा जाने वो कौन सा एक फनकार तो है अंदर, इसका मतलब है जो कि I mean बस temperamental तो आर्टिस्ट की तरह ही है. But you enjoy your work, right? I enjoy my work. Okay. But that's why I'm so picky about my work. It has to be something जिसको आप enjoy भी कर सकें. वरना तो आप मतलब स्क्रिप्ट पढ़ते कहेंगे यार ये क्या करना है इसका. तो